हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर अ पूनम्स डे आउट। You can see that one girl is standing here and this girl is पूनम। So आपकी NCERT बुक में पूनम्स डे आउट का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। So let's begin। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे पहले कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट वी विल स्टडी ऑफ कोर्स अबाउट द चैप्टर, द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, who am I, magic with fingers, let us have some fun, and of course jigsaw puzzle. So of course this chapter is going to be very interesting and I'm sure that you all are going to enjoy with me. So let's start our first chapter. First thing जो आपके बुक में NCERT पेज नंबर 1 पे दिया गया है, माँ please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. पूनम बोलती है अपनी मम्मा से, मम्मा let me go out today. I have been at home for the past 2 days. 2 दिन से she was at home. She could not go anywhere outside the house. Second है I am getting bored, said पूनम। हम भी कभी कभी घर पे जब बहुत दिन तक घर पे बैठ जाते हैं, so we get bored. We really want to go out to have some fun, to go and meet our friends. Similarly, this was happening with Poonam. Poonam wants to meet her friends. Poonam just wants to go out because she was at home for last 2 days. So she was getting bored. But you have still fever. उसकी मामा बोलती है कि आपको तो अभी तक फीवर है, आपका फीवर अभी तक उतरा नहीं है। घर पे भी ऐसा होता है ना कि when we are not good, we are not fine, when we have fever, so mama and papa says कि please be at home, don't go anywhere out. Similarly, Poonam's mother was also concerned and she said Poonam कि अभी आप बाहर नहीं जा सकते because you have still fever. Go outside and lie down on the cot, replied माँ। माँ बोलती है कि अगर आप इतने ही बोर हो रहे हो, so what you can do, you just can go out and lie down in the cot. cot मतलब चारपाई होती है, चारपाई पे जाकर आप लेट जाओ, आपको अच्छा फील होगा। Poonam fell asleep on the cot. Suddenly, something fell on her face. पूनम अपनी मम्मा की बात मानती है, जैसे कि गुड बच्चे जो होते हैं, गुड स्टूडेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, उनके फॉलो करते हैं उनकी बातों को। Similarly, Poonam also agreed and she went outside and lie down in the cot. और उसके ऊपर चेहरे पे कुछ गिरता है। Suddenly, something fell on her face. पूनम woke up at once and touched her cheek. उसकी नींद एकदम से उठती है और वो अपनी चीक को क्या करती है, टच करती है और पता करती है Oh no, whose mischief is this? Mischief का मतलब होता है शरारत, जैसे कि आप सब बहुत ही mischievous students होंगे, isn't it? उसी तरह से वो बोलती है कि Oh my God, ये किसकी शरारत थी? Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. क्या ये शरारत किसी क्रो ने की कि पिजन ने की कि उसके चेहरे पे किसी ने क्या कर दिया, अपनी बीट कर दी। तो वो कहती है कि ये पिजन का था कि क्रो का था। एंड देन शी फाउंड आउट दैट इट वाज ऑफ क्रोज। शी वाज वेरी इरिटेटेड। देन पूनम आगे बढ़ते हैं। Poonam looked up and she saw animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. So, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हमको ये दिख रहा है कि आपके बुक में भी ये चैप्टर का ये फोटो होगा और इसमें यू कैन सी देयर आर डिफरेंट एनिमल्स ऑन दिस पेज। सो आपको ये पता करना है कि what all animals you have it here. So the answer is I can see following animals on the tree: pigeon, squirrel, crow, monkey, butterflies, ants, parrots, cuckoo. So ये सब animals आपको इसमें दिखेंगे. You can also refer to your book NCERT page number 2 and then you can write down the answer, because in that book, in that page number 2, the question is there. Poonam looked up, she saw many animals on the tree. Which animals can you spot
on the tree in the picture. तो you all have to tell that what all animals you can see in the picture. तो अगर आपको आंसर देखना है तो ये आंसर आपके पास दिया हुआ है that there are so many animals. उसमें कौन कौन थे? There were pigeon, squirrel, crow, monkey, butterflies, ants, parrots and cuckoo. Next है पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. अब वो गंदा सा उसके चीक पे आ गया था तो what did she do? She picked a leaf और उससे उसने अपनी चीक को क्या किया? वाइप किया. But her cheek was still sticky. But वो होता है ना कि when you don't go and just do not use the water and soap, the stickiness does not go away. Similarly उसके चीक पे क्या था? वो stickiness था. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. वो कहती है कि चलो एक काम करते हैं, पास में जो पॉन्ड है वहाँ जाते हैं और वहाँ पे अपना चीक को हम करते हैं वॉश. So she decides to go near the pond and thinks that she will wash off her cheek. Next is question is there which is given in your page number 2 NCERT. Which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write their names. Now you have a picture here in your NCERT page number 2. You can see there are animals. The question is related to this picture only कि आपको यहाँ पे कौन कौन से animals दिखते हैं. So animals क्या क्या हैं? Goat, tortoise, crane, frog, buffalo and stork. So this will be the answer of your second question. Now the story is, can you act like the animals seen at the pond? Which animals make what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds. This question is quite interesting, right? ये question बोल रहा है कि क्या आप भी उन animals के sounds और उनकी तरह act कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो please करके बताइए. So the answer will be yes, I can act like the animals seen in the pond. Given below are the sounds produced by some of the animals. So what all animals were there in the pond? Dog. तो अब dog कैसे करता है? Dog of course he does bom bom. Cat हम सबको पता है जब भी हम अपने घर के पास में देखते हैं. So when we see cat we can see that cats make a sound like meow meow. Third is lion. Lion roars grrr. Then frog. Frog कैसा sound निकालता है? Croak croak. गोट कैसा करता है? गोट को तो हम सब ने देखा होगा. गोट का बहुत ही कॉमन जो उसके साउंड मूवमेंट्स रहते हैं वो रहता है मैं. देन क्रो का रहता है काव काव. देन कुकू का रहता है कुकू. सो ये सब आपका आंसर आएगा एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन के लिए कि दीज ऑल आर द एनिमल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स दे मेक. नेक्स्ट चैप्टर हम बढ़ते हैं. Different animals move in different ways to go from one place to another. Now we all know that there are so many animals. Yes, हमने तो अभी pond में भी देखा था there were so many animals in the pond, right? तो ये सारे animals क्या एक जैसे similar होते हैं? No, they all move in different. They all are different with each other. So some animals walk, some animals crawl, some fly and some swim. Yes, हमने भी देखा होगा कि there are animals जो walk करते हैं, some swim, some crawl, some fly. तो ये सब animals are different from each other. For this, some animals use their feet, some use their wings. Of course, some animals जो walk करते हैं, they use their feet. Some animals जो fly करते हैं, they use their wings. Some animals even take the help of their tail. Yes, some animals they use their tail to have movement in their body. So every animal is different from each other. Next है question, you must have seen many animals to write which of them. Now this is again a question in page number 3 NCERT book that कि आपने भी बहुत सारे animals देखा होगा और वो सारे animals में से कौन कौन ये fly कर सकता है, crawl कर सकता है, walk कर सकता है, hop करता है, have wings, have feet and have a tail. So the answer is कौन fly कर सकता है? So of course we know butterfly, pigeon, parrot can fly. Crawl कौन कौन करता है? Lizard, snake and tortoise. Can walk of course cows, buffalo, ox you all have seen they all walk. Second hop कौन करता है? Frog,
kangaroo, hare, ये सब hop करते हैं. Hop means jump कर करके चलते हैं. Then have wings, pigeon, cuckoo, sparrow, they have wings so that they can fly in the sky. Have feet, cow, goat, bear, इनके क्या होते हैं? Feet होते हैं so that they can walk. Have a tail, monkey, cow and buffalo, ये सबके क्या होते हैं? Tail होते हैं. So you can refer the answer for your question that is in your page number 3. Next है animals live in different places. Yes, if animals can walk in different ways, animals can move in different ways, so of course वो रहते भी अलग अलग जगहों पे हैं. Some animals live in the trees, some in water. Yes, आपने देखा होगा monkeys usually कहाँ रहता है? Trees पे रहता है. और fish कहाँ रहती हैं? They live in the water. Some live on land, some live under the ground and some fly in the sky. Yes, कोई ground में रहता है, कोई water में रहता है और some fly in the sky. So every animal is different. Next है some animals even live in our houses. Yes, आप में से कितनों के पास में आपके खुद के animals होंगे? So those animals are known as पेट एनिमल्स. वो पेट एनिमल्स हमारे घरों में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं. नेक्स्ट इज look at the picture given below, color the animals that do not live in your house. Now you can see the picture here, it is given in the page number 4. Question is आप picture देखो और उसमें animals को color करो जो आपके साथ में नहीं रहते हैं. So you can see here what all animals do not live with you, right? So there are horses, there is a एलिफेंट ऑल्सो, रैट्स है, फिश है, डक है. तो इनमें से आपको ये देखना है कि कौन आपके साथ रहते हैं और कौन आपके साथ नहीं रहते हैं. सो दोज एनिमल्स विच डू नॉट लिव विद यू, यू विल हैव टू कलर देम. सो here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. Now you can see these are the incomplete pictures given, है ना? ये सारे pictures complete नहीं हैं. आपको क्या करना है? इनको फिनिश करना है. फिनिश करके आपको ये बताना है कि what all animals are here. So the answer is first is dog, second is fish, third is butterfly. So अगर आप इसको फिनिश करोगे तो you can see that he is a dog, second one is your fish and the last one is your butterfly. So butterfly के wings अगर हमको बनाने हो, so we will have to make like this and the answer will be done. So next question हम बढ़ते हैं आगे. Next is find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. Now you will have to refer NCERT page number 5 और उसमें ये देखना है कि ये पूरे puzzle में where you can see the names of animals. So the first answer is monkey. ऐसे ही आपको ये puzzle को solve करना है. So मैं आपकी help करती हूँ. First is your banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. Now you will have to tell me कि which animal is that who loves to jump, who loves to eat bananas. So the answer is your monkey. Second question is on the walls webs I weave where insects stick and cannot leave. The second hint is कि ऐसा कौन सा animal होता है जो webs बनाता है और अपने insects को उसमें फंसा लेता है. So can you guess? Yes, the answer is spider. So spider का आपका column is this. You can see here, you can mark it from here. Third is I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. कौन ऐसा एनिमल है जो रात को जगता है और दिन में सोता है? Yes, you are right. The answer is an owl. आप यहाँ पे अपना owl को मार्क कर सकते हैं. Next question is croak croak is my sound in water or on land I am found. As I've already told you, croak किसका sound होता है? Yes, you are right. The croak sound is of frog. तो हम यहाँ पे अपने frog को मार्क करेंगे. तो this is how you will be solving your puzzle. Isn't it very interesting? I have enjoyed it. I can tell you कि आप भी enjoy करोगे when you will solve it in your own book. Next. I appear after rainfall, have no feet, so I crawl. ऐसा कौन सा animal होता है जो rainfall के बाद ही आ जाता है? Anyone?
Yes, you are right. The answer is snail. Snail एक ऐसा एनिमल है जो बारिश के तुरंत बाद निकलता है एंड उसके पास में अपने खुद के फीट नहीं होते हैं. It crawls. The answer is snail. Next is slow and steady is my pace. I always win when there is a race. This story we are hearing from our childhood, right? Rabbit and a tortoise. So the answer is who is slow and steady? The answer is tortoise. So आपको अपने यहाँ पे tortoise को mark करना है. See. Now this is how you are going to solve your puzzle, which is given in your page number 5 NCERT book. See, monkey, spider, owl, frog, snail and tortoise. Okay. Now the next question is magic with fingers. अब अपने fingers को हमको use करना है, thumb prints बनाना है और आपको अपना ये पूरा question solve करना है. So this will be done. 1 second. Okay. So अपने thumb prints को हम colors में dip करेंगे and then we will try to make different types of animals. Next is take a look at the picture. Can you distinguish the thumb prints from the other finger prints? आपको ये पिक्चर देखना है और अपने thumbs के fingerprints से ही ये distinguish करना है कि कौन कौन सा animals है. In the same way, using ink, watercolors make picture of animals. Similarly, जैसे आप अपने thumb prints को use करेंगे, you can use ink also, you can use different colors also, and you can make animals. Make pictures using your own imagination. You have to use your own brains, own imagination कि आप different fingerprints, ink, colors को use करके कौन से animals बना सकते हैं. Do not copy the one shown above. You can use the pictures you have made to decorate your school and home. Yes, जब आप ये अपना काम complete कर लेंगे तो you can decorate your home also, you can decorate your school also using these pictures. Next है each group will take a white paper. In each group, one child will draw the face and neck of an animal at the top of the paper and hide it by holding this part. अब क्या करना है? It is an activity कि एक पेज लेना है और पेज में आपको टॉप मोस्ट पेज के ऊपर किसी भी एनिमल का फेस और नेक बनाना है और उस पेज को you will have to fold it. The second step, the second child will draw the body of another animal in the center of the paper and hide it by folding the paper. Second page में what you have to do, the second fold में the another child will make the body of the animal. First वाला paper का जो part है वो fold हो गया with the animal's face and neck. Second में उसकी body को हम क्या करेंगे, बनाएंगे और fold कर देंगे. Third step is the third child will draw the feet of yet another animal. Third child क्या करेगा, third fold पे उस animal के feet बनाएगा. So these are the 3 steps. Now unfold the paper and look at the picture. Does it not look like a funny animal? So when you will unfold the paper, I am telling you, face बन गया elephant का, body बन गया duck का और dogs के हो गए legs. So this is how it is going to be funny and it is a very good activity. I think you all should try once this chapter is finished. Then spend some time under a tree, observe the animals carefully, name the animals which can be seen. So the answer आपके यहाँ पे दिए हैं on the branches, parrot रहता है, crow रहता है, monkey रहता है. On the leaves who all animals stay? Beetle, caterpillar, grasshopper. थर्ड में ऑन द ट्रंक, ट्रंक मीन्स जो ताने होते हैं आपके पेड़ के, उसमें कौन कौन रहता है? स्क्विरल रहती है, एंट लिव्स, टर्माइट लिव्स. ऑन द ग्राउंड में हु ऑल स्टे? रैट, स्नेक एंड रैबिट. एंड द लास्ट इज अराउंड द ट्री, cow, dog and cat. So this is the question which is given in your NCERT page number 8. You can refer from here. Next, now arrange these animals in the order of their size, smallest being the first. Now ये जो भी आपने animals थे, आपको उनके size के according उनको क्या करना है? Arrange करना है. So the answer will become the first, the smallest animal is termite, जिसको हम दीमक भी कहते हैं. Second is ant, चींटी, then beetle, caterpillar, grasshopper, rat, parrot, crow, squirrel, snake, rabbit, cat, dog, monkey and the biggest animal in सब में कौन है? The cow. The cow will come at the last. So this is your question number which is given in your NCERT page number 8.
Now there is one more activity which is for you and it is going to be very interesting. That is your jigsaw puzzle. Now make a jigsaw puzzle using a picture of any animal. कोई भी jigsaw puzzle बनानी है आपको, कोई भी animal को imagine करके. Paste the picture on a cardboard. Cardboard में उस animal को क्या करो, आप picture को paste कर दो. Now cut the cardboard along the edges of the picture. So when you do the cutting, you see ना the borders and all. So you will have to follow that cutting कि आपके animals ना cut हो, edges cut हो. Cut this cardboard into the unequal pieces. अब वो सारे boards को आपको unequal pieces में cut करना है. Give these pieces to your friends. Ask them to put the pieces together and identify the animal. और फिर ये puzzle अपने friends को दो and ask them to arrange the animals. It is going to be very interesting. Next is, so आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, आपका पूनम्स डे आउट, द फर्स्ट चैप्टर. आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस चैप्टर विद मी. मिलते हैं अपनी सेकेंड क्लास में. और हाँ, उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस किंडरगार्टन से ग्रेड 12 तक के सारे अवेलेबल हैं. इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू. बाय बाय.